dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class first computer, chapter number 4, that is about parts of a computer. So today in this session, we will learn about some of the main parts of a computer, which all together forms a computer. See, so students, they have given you a picture over here, in which they have shown you some main parts of a computer. So basically there are 4 main parts of a computer. That is, first of all, the screen known as monitor. Alright, so this is monitor, number 1 main part. Second, we have the CPU. Alright, this is a second main part of a computer. Third, we have this keyboard. Keyboard आपका third part है, computer का main part. And the fourth, this is mouse. Alright, chalo. So now let's learn about all of these main parts one by one. And the very first we know that is monitor. It looks like a television. Monitor एक television screen की तरह दिखता है. It shows the work done on the computer. जो भी work आप computer पे कर रहे हैं वो सारा इसी screen पर आपको show होगा, दिखेगा. Then we can watch movies and cartoons on the monitor. इस monitor screen पर आप movies देख सकते हैं, cartoons देख सकते हैं. Monitors are also available with a flat screen. इसके अलावा ये monitors क्या flat screen के साथ भी available है. Monitor is also known as, very important students, monitors को हम visual display unit यानी कि VDUV बोलते हैं. Second main part of computer we have is CPU, that is central processing unit. ठीक है, तो CPU का मतलब है central processing unit and it is known as brain of the computer. CPU को brain of the computer कहा जाता है. Why? Because it helps the computer to think and work according to the commands given by us. जो भी command हम computer को provide करते हैं, उस command के according ये CPU एक computer को think, सोचने के लिए and work करने में help करता है. Then it is present inside the CPU box. ठीक है, CPU कहाँ present होता है? CPU box के अंदर. Third main part we have keyboard, which is the main input device of a computer. Keyboard computer की main input device है. Secondly, a keyboard has many small buttons called keys. एक keyboard में बहुत सारे छोटे छोटे buttons होते हैं. Alright, you can see, and all of these buttons are known as keys. Keys के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट? नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं एंड सिंबल्स होते हैं which are written on of these keys. Keys are used for typing. इन keys का यूज हम करते हैं टाइपिंग के लिए. It helps us to give commands to the computer. इसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड प्रोवाइड करते हैं. Alright, चलो. The last main part of a computer we have is mouse and it is an input as well as pointing device. Mouse input के साथ साथ pointing device भी है कंप्यूटर की. ठीक है, mouse में 2 or 3 buttons present होते हैं. We can also give commands by using the mouse. इसके अलावा कंप्यूटर को commands provide करने के लिए हम mouse का भी यूज कर सकते हैं. It helps to draw pictures. mouse के थ्रू आप pictures draw कर सकते हो. We can also play games by using a mouse. And mouse का यूज करके हम कंप्यूटर पर games भी खेल सकते हैं. See, commands are instructions given to a computer. What are commands? Commands होते हैं instructions, task जो एक कंप्यूटर को provide किए जाते हैं to perform. And the monitor, CPU, keyboard, mouse, they work together and form a computer system. इस चारों main part एक साथ work करते हैं and इनसे मिलकर ही क्या बनता है? Computer system बनता है. Now next we come to what? Exercise portion. ठीक है, चलो. So first of all, darken the correct option in the OMR sheet. See, first of all, dash help us to draw pictures. So इनमें से कौन सा part है कंप्यूटर का जिसके through we could draw pictures? That is CPU, mouse, keyboard और monitor. So pictures draw करने के लिए what we use? We use mouse. So option B is correct. Alright. Then a computer has a keyboard with many. कंप्यूटर के पास एक keyboard होता है जिस पे बहुत सारी क्या present होती हैं? Keys, right? Option C is correct. The small buttons on the keyboard are known as keys. Then dash is the brain of the computer, that is CPU. Central processing unit is the brain of the computer. Option B is correct. Now let's come to the next, that is fill in the blanks.
फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, दैट इज VDU. राइट ओवर हियर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सेकेंड डैश, अ डैश हेल्प अस टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. किसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड्स प्रोवाइड करते हैं? दैट इज कीबोर्ड. राइट, कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर्स को कमांड प्रोवाइड कर सकते हैं. डैश आर द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू अ कंप्यूटर. जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वी कॉल देम कमांड्स. राइट, सो राइट ओवर हियर कमांड्स. Next, write true and false against each statement. First is a monitor looks like a real mouse. Monitor एक real mouse की तरह दिखता है. False. Monitor television की तरह दिखता है. A mouse is present inside the CPU box. Mouse CPU box के अंदर present होता है. False. CPU is present inside the CPU box, right? We can play games by using a mouse. Yes, true. And then CPU is the brain of the computer. Yes, CPU क्या है? कंप्यूटर का brain है. Again, the statement is true. Next, answer the following question. The very first question is write a short note on CPU. CPU के ऊपर short note लिखना है. तो CPU क्या है? CPU stands for Central Processing Unit. It is known as brain of the computer. Right? It is present inside the CPU box, and mainly it control all the work which is done by the computer. नेक्स्ट, राइट टू यूजेस ऑफ अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के कोई भी दो यूजेस लिखने हैं. सो कीबोर्ड का यूज किया जाता है टू टाइपिंग, फॉर पर्पज ऑफ टाइपिंग, एंड ऑल्सो टू गिव कमांड्स और द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. देन राइट टू यूजेस ऑफ अ माउस. माउस का यूज करते हो. माउस आपका इनपुट एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस है. वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ माउस. वी कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माउस. ठीक है, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. That's all for today. Let's meet very soon in the next session, and then keep learning well, and thanks to everyone.